that is Principles of Inheritance and Variation. Today we'll talk about the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance was given by Sutton and Boveri. Sutton and Boveri gave this chromosomal theory of inheritance, and they noted कि chromosomes का जो behavior है that is similar to the behavior of genes, means they are showing parallel behavior. So they noted that the behavior of chromosomes are parallel to the behavior of gene, and it is liable to have a same behavior because chromosomes are having the genes inside them. So if they are present in them, so they will show the same behavior. So this was something noted by Sutton and Boveri, that behavior of chromosome is parallel to behavior of genes. Now important point to remember, जो important conclusion Sutton and Boveri ने दिए थे, that is chromosomes as well as genes both occur in pairs. Both chromosomes and genes are occurring in pairs, and the two allele of a gene pair, किसी भी जीन पेयर के लिए जो दो एलील्स होते हैं, they are located on the homologous sites of the homologous chromosomes. Homologous chromosomes की homologous site पे जीन के दो alleles present होते हैं. Now homologous chromosomes are of same shape, size and having the same genes on the same location. Different alleles present होते हैं on the same location. So that is homologous chromosome. So for example, during sexual reproduction, one homologous chromosomes come from the father and the other come from the mother. So same gene के अलग-अलग alleles present होते हैं और उनकी pairing होती है. Then finally the dominant allele expresses. So the two allele of a gene pair are located where? On the homologous site of a homologous chromosomes. Now let's proceed further and we'll talk about another conclusion कि जो independent pair of chromosomes हैं, इनका segregation होता है. chromosome की pairing होती है and then इनका जो segregation होता है at the time of gamete formation, it occurs during which stage of cell division? That is anaphase of meiosis 1. Now just recall कि आपने cell division की stage chapter 4 में भी you have studied, chapter 3 you have studied that in human reproduction, that chapter 3 human reproduction you have studied that during prophase 1 of meiosis the development of oogonia is arrested. The development of oogonia is arrested at which stage? That is prophase 1 of meiosis. And यहाँ पे we are coming to know about another stage, anaphase 1 of meiosis 1, जहाँ पे independent pair of chromosomes का segregation हो रहा है. So these are important questions that can be asked in CBSE board examination. That when was the development of oogonia arrested? That was prophase 1 of meiosis, and this is anaphase 1 of meiosis. तो anaphase 1 of meiosis में independent pair of chromosomes का segregation होता है. So now Sutton and Boveri argued that pairing and segregation of chromosomes would lead to the segregation of pair of factors. Means अगर pairing और segregation chromosomes का होगा, then it will also affect and lead to the pairing of genes. Genes का भी segregation होगा. So segregation of chromosomes will lead to segregation of genes, and this they united, they collected the knowledge of this chromosome segregation with Mendelian principle, and they called it together as chromosomal theory of inheritance. So what Sutton and Boveri did, finally they said that pairing of chromosome would lead to pairing of genes also, कि अगर chromosome की pairing होती है तो genes की भी pairing होगी, and they united the knowledge of chromosomal segregation with Mendel principle. Mendels के जो laws थे, जो principle थे, उसके साथ उन्होंने अपनी chromosomal segregation की knowledge को unite किया, and together they gave the chromosomal theory of inheritance. So this was all about chromosomal theory of inheritance. It has been asked in CBSE and it is an exemplar question also. Now moving ahead towards T.H. Morgan, Thomas Hunt Morgan. Now this person is known as father of experimental genetics because जो भी rules, जो भी principles Mendel ने दिए, उन पर फाइनली एक्सपेरिमेंटेशन किया एंड एक्सपेरिमेंटली उसको वेरीफाई किया. दैट वाज डन बाय T.H. Morgan. So since he performed many experiment on those principles, so we call T.H. Morgan as the father of experimental genetics. Means father of genetics is Mendel, Gregor John Mendel, and father of experimental genetics, that is T.H. Morgan, because he gave the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance verb
probably तो Sutton and Boveri ने दिया था, but the experimental verification was provided by T.H. Morgan. Now how did he do so? He selected, like Mendel selected pea plant Pisum sativum, and he had several reasons for that. So he selected fruit fly Drosophila melanogaster. So he selected which organism? Morgan selected fruit fly, which is known as Drosophila melanogaster, and now he found that fly suitable because of the following reasons. Because it could be grown in simple synthetic medium in a laboratory. You can easily grow that fly in a simple synthetic medium in a laboratory, and they can complete the life cycle in only 2 weeks. It just requires 2 weeks, 15 days to complete a life cycle. So a short lifespan hoga, then it will be easy for the biologist to come up to conclusion early. And a single mating can produce large number of flies. Similar was the case in pea plant में क्या हो रहा था, large number of pea seeds were produced, and यहाँ पे भी the same thing is happening, that a single mating is producing large number of flies, and male and female flies are easily distinguishable. Clear cut sex differentiation was there, means male and female were easily distinguishable, कि male and female fly में clear cut differentiation था, and it has many types of heredity variations. उसमें बहुत सारे heredity variations present थे that were easily observable with low power microscopes. So these were the 5 reasons why Morgan considered Drosophila suitable for conducting his studies. Now, what were the contributions that was given by T.H. Morgan? T.H. Morgan ने क्या क्या contributions दिए हैं? He discovered that genes are located on chromosomes in a linear and specific order. So उन्होंने ये discover किया था कि ये जो genes chromosome पे present होते हैं, they are present in which order? They are present in a line, in a linear and specific order में present होते हैं. And he discovered crisscross inheritance. उन्होंने crisscross inheritance को discover किया था. Crisscross inheritance is basically where most of the daughters resemble the father. And if you have observed a population around you, you might have seen that 90% of the daughters resemble their father and 90% of the son resemble their mother. So this type of inheritance is known as crisscross inheritance, and he was the one who discovered this crisscross inheritance. He also discovered the technique of chromosome mapping या gene mapping या linkage mapping का concept भी इन्होंने discover किया था, and he discovered sex chromosome and sex linkage. Linkage ये जो term है ये T.H. Morgan से related है, बहुत important term है, and we'll talk about it. So these were the few contributions T.H. Morgan has made in genetics. Now let's talk about further because Mendel's law of independent assortment states that all the genes of chromosomes are not inherited together, they assort independently. अभी तक till now we have studied that Mendel's law of independent assortment के according all the genes of chromosomes are not inherited together, they have a independent pairing. वो अपने आप independently pair कर रहे थे. If you can recall the dihybrid cross जहाँ पे capital R capital Y की pairing हो रही थी, capital R small y की भी pairing हो रही थी, और small r small y की pairing हो रही थी, then small r capital Y की pairing हो रही थी. So Mendel ने law of independent assortment में ये बताया था that all the genes of a chromosome they do not pair together, वो independently assort करते हैं, independently pairing करते हैं. But Morgan found out that genes situated on the same chromosome are inherited together. वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं वो सारे जीन्स एक साथ ही इनहेरिटेड होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं होते हैं क्योंकि वो लिंक्ड होते हैं, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं. सो दे हैव अ फिजिकल एसोसिएशन, सो दे विल गो टुगेदर इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट टर्म इज नोन एज लिंकेज. सो बेसिकली टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया था? टी.एच. मॉर्गन ने बेसिकली मेंडेल के थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन प्रोवाइड किया था, एंड दैट एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज लिंकेज. So Mendel की law of independent assortment के according the genes on the chromosome are not inherited together, they assort independently, वो अलग अलग pairing कर सकते हैं. But Morgan found out the exact idea. He said that genes which are present on the same chromosomes, वो सारे genes जो एक
क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो एक साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं एंड दे डू नॉट गो इंडिपेंडेंटली. दिस टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, ये जो टेंडेंसी है, ये जो कैपेबिलिटी है सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट दो या दो से ज्यादा जीन्स की टू गो टुगेदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज नोन एज लिंकेज. लिंकेज को हम दो जीन्स या दो से ज्यादा जीन्स के बीच का फिजिकल एसोसिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं, तो उनके बीच में एक एसोसिएशन है. तो जब नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होना होता है तो वो एक साथ ही जाते हैं, वो अलग अलग पेयरिंग शो नहीं करते हैं. That is linkage, and the point to be noted is that linkage is the exception to the Mendel's law of independent assortment. I hope you've got the point. Mendel's law of independent assortment stated कि all the genes of chromosomes are not inherited together. वो independent assortment show करते हैं, वो अलग अलग pairing कर सकते हैं. But Morgan found out that the genes situated on the same chromosome are inherited together and not independently. जो अलग अलग chromosomes पे present genes हैं वो independent assortment show कर सकते हैं, लेकिन जो genes same chromosome पे present हैं वो independently assort नहीं होते, वो एक साथ जाते हैं. And this tendency to remain together during the process of inheritance, that is known as linkage. The tendency of two or more genes of the same chromosome to remain together during the process of inheritance, that is known as linkage. And linkage को हम physical association भी बोलते हैं, क्योंकि एक ही chromosome पे ये सारे genes present होते हैं, तो इनके बीच में एक physical association होता है, and we call it linkage. Now correlation between linkage and recombination. लिंकेज के साथ साथ एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज रिकॉम्बिनेशन, एंड मॉर्गन एंड हिज ग्रुप ऑब्जर्व. नाउ मॉर्गन वाज वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ कलीग्स एंड ऑल ऑफ देम ऑब्जर्व्ड कि व्हेन इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस two genes are situated on the same chromosome. जब दो genes same chromosome पे present होते हैं तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का जो रेशियो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं. So just make it clear in your mind that when Morgan and his colleagues were observing that two genes present on the same chromosomes were crossed, मतलब वो next generation में जाते हैं, तो जो proportion होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है और नॉन पेरेंटल आने की बहुत कम होती है. सो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस कि ये लिंकेज की वजह से हो रहा है. मॉर्गन गेव द रीजन दैट ऑल दिस इज हैपनिंग ड्यू टू लिंकेज, क्योंकि वो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, तो वो एक साथ जाते हैं, उनके बीच में एसोसिएशन होता है. दैट इज वाई 90% चांसेस रहते हैं कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन अपीयर हो, एंड 10% देयर इज always a chance of the non-parental combination. So हमेशा जो parental gene combination है वो प्रोजेनी में ज़्यादा एक्सप्रेस होगा और जो non-parental gene combination है वो least एक्सप्रेस होगा. Now linkage is the reason for parental gene combination. अगर प्रोजेनी है, for example 4 offspring है, उसमें से 3 ऑफस्प्रिंग में पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हो जाएगा एंड एक ऑफस्प्रिंग में नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस हो रहा है. सो फ्रॉम दिस ही सेड कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की जो चांसेस होते हैं, जो पॉसिबिलिटी होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, दैट इज ऑलवेज हायर देन द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. एंड मॉर्गन सेड दैट द रीजन इज लिंकेज, क्योंकि वो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन है, लिंकेज है. दैट इज वाई पेरेंटल gene combination. So parental gene combination is due to linkage and non-parental gene combination का जो formation होता है that is known as recombination. Now Morgan and his group also found one more thing. ये तो they found out कि जो proportion होता है, अगर dihybrid cross है और दो genes एक chromosome पे situated हैं तो parental gene combination की possibility ज़्यादा होती है हमेशा than the non-parental gene combination. तो जो parental gene combination है that is the linkage is the reason and non-parental gene combination is due to recombination. Now they also found out one more thing, that if genes are present on the same chromosomes and they are tightly linked, जो genes same chromosomes पे present हैं और वो tightly linked हैं, तो वो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम शो करते हैं. मीन्स इफ द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, वो ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है, तो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे. नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. मीन्स लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम. सो वन एग्जाम्पल इज
ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. व्हाइट आई एंड येलो बॉडी के लिए जो जीन्स थे दे वर टाइटली लिंक्ड and they showed only 1.3% recombination. So this was something found out by them कि if the genes present on the same chromosome are tightly linked, linkage ज़्यादा है तो recombination कम हो रहा है. For example, white eye और yellow body के जो genes थे ड्रोसोफिला की body पे, जो white eye और yellow body के genes थे वो tightly linked थे, तो वहाँ पे recombination का percentage is very low, that is 1.3%. Now the other case is when the genes present on the chromosome were loosely linked. जब वो loosely linked थे means they were having a स्पेस बिटवीन देम, तो जब वो लूजली लिंक थे तो उनका रिकॉम्बिनेशन बहुत हाई जा रहा था. फॉर एग्जाम्पल वाइट और मिनिएचर विंग के जो जीन्स थे दे वर लूजली लिंक्ड इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में दो जीन्स थे, एक वाइट बॉडी के और मिनिएचर विंग्स के. तो वाइट और मिनिएचर विंग के जो जीन्स थे वो लूजली लिंक थे, तो दे शोड 37.2% रिकॉम्बिनेशन. वहाँ पे 1.3% एंड यर 37.2% रिकॉम्बिनेशन मीन्स यहाँ रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज हाई हो गया क्योंकि लिंकेज कम थी, लूजली लिंक थे. एंड वहाँ पे इन द फर्स्ट सिचुएशन दे वर टाइटली लिंक्ड, सो लिंकेज ज़्यादा थी तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन कम हो जा रहा था. दैट वाज 1.3%. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एग्जाम्पल, द परसेंटेज, ऑल इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट. नाउ मॉर्गन स्टूडेंट Alfred Sturtevant used this frequency of recombination. Now he used recombination frequency as a distance between the genes. उन्होंने recombination frequency को genes के distance की तरह use करना start कर दिया. Means जितना ज़्यादा दो genes लूजली या डिस्टेंस पे प्लेस्ड होंगे, जितना दूर होंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उनके बीच में, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ज़्यादा नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनेंगे. सो ही स्टार्टेड यूजिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. कि रिकॉम्बिनेशन को ही उन्होंने डिस्टेंस जीन्स के बीच में डिस्टेंस की तरह कंसिडर कर लिया. एंड ही स्टार्ट मैपिंग द पोजिशंस ऑन क्रोमोसोम्स, और उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर जीन की मैपिंग स्टार्ट कर दी. एंड दीज जीन मैप्स या लिंकेज मैप्स आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन जीनोम सीक्वेंसिंग. किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम सीक्वेंसिंग में ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं जीन मैप्स, और ये एल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने किया था अलॉन्ग विद मॉर्गन. उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कंसिडर कर लिया था कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, जितनी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी इट मीन्स कि उन जीन्स के बीच में उतना डिस्टेंस है. सो एंड उनके बेसिस पे ही स्टार्टेड मैपिंग द पोजिशंस ऑफ द जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स, एंड दीज जीन मैप्स या लिंकेज मैप्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोम सीक्वेंसिंग में ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Let's recall, we have studied about multiple alleles, we have studied about pleiotropy. So multiple alleles में basically क्या होता है कि multiple alleles means more than two alleles are governing the same character. More than two alleles एक character को control कर रहे हैं, like in blood group, ABO blood group. Now let's talk about pleiotropy. प्लियोट्रोपी में क्या हो रहा था, दैट वन जीन इज अफेक्टिंग और गवर्निंग मोर देन वन कैरेक्टर. एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है. नाउ हियर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. Now here many genes, 3 or more genes are controlling one character. So basically please have clear cut differentiation and be sure about these three concepts because there is a lot of confusion between the three. Polygenic inheritance में क्या हो रहा है, 3 or more genes are controlling the traits, किसी एक character को control कर रहे हैं. And pleiotropy में what was happening, that one gene was controlling more than one character. And here many genes are controlling one character. So pleiotropy and polygenic inheritance एक दूसरे का opposite हो गए. If you have clear cut understanding of this, that multiple alleles में more than two alleles are governing the same character. एक से ज़्यादा alleles हैं जो एक character को control कर रहे हैं.
प्लियोट्रॉपी में व्हाट इज हैपनिंग दैट वन जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, जहाँ वो सिकल सेल भी प्रोवाइड कर रहा है और वो मलेरिया से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है. स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, जहाँ पे वो स्टार्च की सिंथेसिस भी कर रहा है और सीड के शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. So these were the examples of pleiotropy. Now polygenic inheritance में what is happening that 3 or more genes are controlling one trait. So that is known as polygenic trait, and the inheritance is known as polygenic inheritance. So when the traits are, when a particular trait or a character is controlled by 3 or more genes, that is known as polygenic trait, and the inheritance is known as polygenic inheritance. Now besides the effect of multiple genes, इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट. ये मल्टीपल जीन्स जो एक साथ, इतने सारे जीन्स इस इनहेरिटेंस को इफेक्ट करते हैं. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्वायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है. मीन्स ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दो चीज़ों से इफेक्टेड होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दोज 3 or more genes means multiple genes, and the influence of environment. Very important point that polygenic inheritance is affected by two things: the effect of multiple genes and the influence of the environment. Environment का भी effect होता है polygenic inheritance में, count होता है. Now in polygenic inheritance the phenotype reflects the contribution of each allele. Now here this point is also very important to note कि polygenic inheritance में suppose 3 genes are there जो एक character को control कर रहे हैं. So तीनों genes का contribution is added, is counted. Means the effect of each allele is additive, means added. The effect of each allele, the effect of each gene is counted. So this is very important कि ऐसा नहीं है कि अगर 4 जीन्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं तो सिर्फ 2 का ही कंट्रीब्यूशन काउंट किया जाएगा. द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील इज एडिटिव और इट इज काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन स्किन कलर. Human skin color we have studied previously also, and human skin color we are studying here also. Polygenic inheritance का example है human skin color. Human skin color we have studied as an example in incomplete dominance, जहाँ पे dark skinned person crossed with white skinned female, then they lead to individual with intermediate skin tone. So that was incomplete dominance. Now here polygenic inheritance का best example है human skin color. Let's understand how. Human skin color is an example of polygenic inheritance or quantitative inheritance. Why quantitative? क्योंकि यहाँ पे हर एक individual allele, हर एक gene का contribution add हो रहा है, count हो रहा है. So we are considering the quantity. That is why polygenic inheritance is also known as quantitative inheritance. Now suppose we assume that there are 3 genes A, B and C which are responsible for skin color in humans. 3 genes हैं जो skin color के लिए responsible हैं. उनका dominant form है capital A, capital B, capital C. तो dominant form is responsible for dark skin, and the recessive form small a, small b, small c is responsible for light skin. So the person with or the genotype with all dominant gene, वो genotype जिसमें सारे dominant genes हैं, means capital A, capital B, capital B, capital C, ये तीनों, ये combination जिस individual में होगा that will have darkest skin, whereas the genotype small a, small b, small c, small b, small c will have lightest skin. So जिसमें सारे dominant genes होंगे that individual, that genotype will have darkest skin, and जिसमें सारे recessive होंगे that will have lightest skin. Now the thing is that the genotype with 3 dominant, now the genotype with 3 dominant and 3 recessive allele, now जिसके पास 3 dominant और 3 recessive alleles होंगे that will have intermediate skin color. So this is how हर allele का contribution add किया जा रहा है. That is why polygenic inheritance, और इसी वजह से polygenic inheritance को हम quantitative inheritance बोलते हैं. And that is why the shade of skin, the skin tone varies. Because अगर कोई एक एलील कम या एक एलील ज़्यादा, एक एलील डोमिनेंट ज़्यादा होता होगा या एक एलील रिसेसिव ज़्यादा होता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्किन टोन चेंज होती जाती है. देयर आर मेनी शेड्स ऑफ स्किन अवेलेबल.
in humans. So that is because it is showing polygenic inheritance, and polygenic inheritance is the contribution of each allele is added. Now let's move ahead and talk about sex determination. Now sex determination के बारे में people had very less idea, and there were many cytological experiments or observations which were made in number of insects. Biologists started conducting many cytological observations in insect, and उसी से पता चला that there is a genetic or chromosomal basis of sex determination. There is a genetic और chromosomal basis of sex determination, उसमें भी genes और chromosomes involved हैं. And one day Henking, this biologist, observed a structure. He was doing those observations or experiments in insects, so he observed a structure during spermatogenesis in few insects. कुछ इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे हेनकिन ने कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, एंड ही नेम दो स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी, एंड दिस एक्स बॉडी ऑफ हेनकिन इज एक्चुअली द एक्स क्रोमोसोम नाउ. So can you relate Mendel के factors? Mendel ने factors जिन्हें consider किया था, there was something that is passed on from the parent to offspring stable condition में, that was factors as called by Mendel. But Mendel के जो factors थे वो actually nowadays we call them genes. Now this is what is happening here also, that the X body of Henkin ने जिसे X body की तरह identify किया था, that was actually X chromosome of today. Okay, now let's talk about different sex determination in organism. Sex determination in grasshopper, mostly जो insects होते हैं and grasshoppers, they show XO type of sex determination. X0 actually होता है, ये XO नहीं होता है. Now X0 type of sex determination where males have only one chromosomes. यहाँ पे मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है besides autosomes. Now grasshoppers में 24 chromosomes होते हैं. So 22 is the autosome. So males have X0 type of sex determination. मेल के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम है. So 22 autosome plus X0. So 23 chromosomes हो गए in total male grasshoppers. Whereas females have a pair of X chromosomes besides autosomes. So 22 autosomes plus the pair of X chromosomes. तो female grasshopper में 24 chromosomes होते हैं in total. So male and female grasshoppers are having different number of chromosomes in their body because वहाँ पे follow हो रहा है X0 type of sex determination. Sex determination in grasshopper is of which type? Exotype, जहाँ पे male is having only one X chromosome besides autosome and female is having a pair of X chromosome besides autosome. So 22 plus X, क्योंकि ये 0 है, so 23 chromosomes in total हो गए male grasshopper में, and 24 chromosomes in female because 22 autosomes and 2 this sex chromosome, so 24 chromosomes in female grasshopper. Now let's move ahead and talk about sex determination in humans and Drosophila. And humans and Drosophila, they basically show same type of sex determination mechanism, that is XY type of sex determination. Humans में, as you already know, that out of 23 pair of chromosomes, 23 pair of chromosomes होते हैं human की body में, जो 22 pairs होते हैं वो exactly similar होते हैं male and female की body में, and we call them autosomes. Now जो 23rd pair होता है, that is the sex chromosome, वो different होते हैं. Now in female जो sex chromosome present होते हैं, that is a pair of X chromosomes. XX present होता है female में, whereas male में an X chromosome is present. Male में एक X chromosome होता है और उसका जो दूसरा chromosome होता है, जो उसका counterpart होता है, वो थोड़ा सा small होता है. It is distinctly smaller and we call them Y chromosome, and हम उन्हें बोलते हैं Y chromosomes. Now male is having XY and female का जो sex chromosome होता है, that is having XX. Now during spermatogenesis, जब sperm बन रहे होते हैं, तो what happens? Male produces two type of gametes. Male दो तरह के gametes produce करते हैं, क्योंकि ये XY अलग अलग होंगे तब gamete का formation होगा. 50% sperm carry करते हैं X chromosome and 50% sperm carry करते हैं Y chromosome. Whereas जो फीमेल है वो एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस करती है which is having X chromosome in either of the situation. So यहाँ पे if you just keep a check, you will get to know that it is the male which is making the difference.
The chromosomes, the sex chromosome of male act as a deciding factor. So if the ovum or the egg fuses with the sperm carrying X, अगर ovum जो ऑलरेडी एक्स कैरी कर रहा है वो स्पर्म से फ्यूज करता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स एंड एक्स फ्यूज टुगेदर एंड गिव राइज टू फीमेल. So if ovum fuses with sperm carrying X, the zygote develops as female. And if ovum fuses with sperm carrying Y, so zygote develops into male, because ovum is having X in either case. हर केस में ovum के पास X ही होगा और sperm के पास जो X और Y है वो decide कर रहा है whether the child will be a girl or a boy. So hence it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. ये sperm का genetic constitution होता है जो child का sex determine करता है. And women should not be blamed for giving birth to female child, as it has been done in our society that women has been continuously blamed for giving birth to a female child. And genetically if we look at it, then it is very wrong, because it is the male which decides. Now, in each pregnancy, there is always a 50% probability of a girl child or a boy child, because we know कि gametogenesis के time पे only 50% of sperm carry X and 50% carry Y. So the probability is always 50%. Now talking about sex determination in honeybee. अभी तक वी वर टॉकिंग कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन था वो बेस था ऑन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल इज रिसीविंग, कि कौन से टाइप का सेक्स क्रोमोसोम उनकी बॉडी में आ रहा है. बट हियर इन हनी बी द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन इंडिविजुअल इज रिसीविंग. कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है वो उसका सेक्स डिटरमाइन करता है. लाइक ग्रास हॉपर में अगर स्पर्म एक्सो अगर कोई इंडिविजुअल एक्सो टाइप ऑफ क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है देन दैट विल बी मेल एंड एक्स तो फीमेल. इन ह्यूमंस इन ड्रोसोफिला अगर एक्स वाई रिसीव कर रहा है तो मेल, एक्स एक्स रिसीव कर रहा है तो फीमेल. तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा था उसका सेक्स डिटर्मिनेशन. वेयर एज इन हनी बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड वेदर the sex of honeybee. So it is based on number of chromosomes कि कितने number of chromosome उस honeybee ने acquire किए. So fusion of sperm and ovum leads to formation of female. जब sperm और ovum का fusion होता है then female का formation होता है, and female in a bee colony is queen or worker. So either वो female queen होगी या worker होगी. That is females में fusion से बन रही हैं. So sperm और egg का fusion हो रहा है. So females are diploid and they have 32 chromosomes. Please understand, try to understand that sperm and egg का fusion होगा, then it leads to the formation of female honeybee and it may be queen or worker. So females are diploid and they have 32 chromosomes, whereas the unfertilized egg जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है एंड अनफर्टिलाइज्ड एग पार्थेनोजेनेसिस फिनोमेना के थ्रू मेल में डेवलप होता है, दैट इज नोन एज ड्रोन्स. सो यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंगल जो ओवम है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, पार्थेनोजेनेसिस फिनोमेना के थ्रू मेल में डेवलप हो जाता है, दैट आर ड्रोन्स. एंड दीज मेल्स आर हैप्लॉइड क्योंकि यहाँ फ्यूजन नहीं हुआ. सो दीज मेल्स आर हैप्लॉइड एंड दे हैव 16 chromosomes. That is important, that the number of chromosomes determine the sex of honeybee. If it is diploid and have 32 chromosomes, then it is female. If it is haploid and have 16 chromosomes, then it is male. Now male क्योंकि parthenogenesis से बन रहे हैं, so they produce sperm by mitosis. क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी वो हैप्लॉइड हैं, तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन माइटोसिस के फिनोमेना के थ्रू करते हैं. They do not have father and they cannot have sons, but they can have grandfather and grandsons. क्योंकि उनका फॉर्मेशन, उनका जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मेल और फीमेल का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है. सो दे डू नॉट हैव अ फादर एंड दे डू नॉट हैव अ सन, बट दे हैव अ ग्रैंडफादर एंड दे हैव अ ग्रैंडसन. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then one more important point to note, that XO and XY type of sex determination if you consider, अगर आप XO और XY type of sex determination को consider करेंगे, then you will see that it is the male that is producing two type of gametes. मेल ही सब दोनों सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म में दो तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. In one condition, X0 type of sex determination में either with or without X chromosome, या तो X0 बन रहा है या तो XX बन रहा है. So या दो तरह के गैमीट्स X0 type of sex determination में मेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो with और without X chromosome, या तो स्पर्म में एक X है या तो X नहीं है.
एंड XY में या तो some are having X chromosome and some are having Y chromosome. So males are heterogametic. इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेट्रोगैमेटिक है, मेल अलग टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है. And this type of sex determination mechanism shows male heterogamity, whereas births की condition में कुछ अलग situation है. The chromosome number is same in both male and female, but the different type of gametes are produced by females. Now chromosome number births के केस में chromosome number तो same है, it is not different in male and फीमेल, जैसे हनीबी में हो रहा है, जैसे ग्रासहॉपर में हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर मेल और फीमेल की बॉडी में अलग है. बट बर्ड्स में ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है. क्रोमोसोम नंबर आर सेम इन मेल एंड फीमेल बॉडी, बट द डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मेल. The different types of gametes are produced by female. In previous sex determination mechanism, male heterogametic थे, but here in births, females are heterogametic, means ZW chromosome is of female bird and ZZ belongs to male bird. So here in birds, the females show heterogamity, and in XO and XY type of sex determination, the males show heterogamity. तो grasshoppers, humans, Drosophila, इन सब में male heterogametic होता है, and in birds the female are heterogametic, वो different type of gametes produce करती है. Now let's talk about mutation. Mutation is the change in DNA sequence. Now जब भी DNA के सीक्वेंस में चेंज होता है, उससे एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिफर होता है, उसमें चेंज होता है, एंड फाइनली उसका फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है. दैट इज नोन एज म्यूटेशन. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लिंक. म्यूटेशन इज अ चेंज इन DNA सीक्वेंस विच रिजल्ट्स इन द चेंज इन जीनोटाइप, एंड अगर जीनोटाइप चेंज होता है, देन अल्टीमेटली द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंजेस. नाउ अपार्ट फ्रॉम रिकॉम्बिनेशन, एक तो रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आ रहा था किसी भी प्रोजेनी में. म्यूटेशन इज ऑल्सो अनदर फिनोमिना. म्यूटेशन भी एक फिनोमिना है जिससे किसी भी प्रोजेनी में वेरिएशन आता है. सो अभी तक वी स्टडीड अबाउट टू फिनोमिना जिनके थ्रू वेरिएशन इंट्रोड्यूस होता है किसी भी जनरेशन में. वन इज रिकॉम्बिनेशन, एक तो रिकॉम्बिनेशन हो गया जो अभी वी हैव स्टडीड अबाउट TH मॉर्गन, एंड सेकेंड वन इज म्यूटेशन. म्यूटेशन भी वो फिनोमिना है जिससे वेरिएशन आता है. नाउ लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ DNA, जब DNA के सेगमेंट का लॉस होता है या गेन होता है, दैट रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स. तो उसमें क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस या ऑल्टरेशन आ जाता है, and these alteration result in abnormality. I repeat, loss or gain of segment of DNA. DNA की segment यानी कि जीन का loss या gain होता है तो क्रोमोसोम में changes आ जाते हैं. There are alteration in chromosomes, and chromosomes में alteration का मतलब abnormality हो जाएगी जिसे हम chromosomal aberrations बोलते हैं. And chromosomal aberration का best example है cancer cells. Cancer cells में chromosomal aberrations observe होते हैं. So I hope you have understood what I was trying to tell you कि जब भी जीन का लॉस या गेन होता है उससे क्रोमोसोम में चेंज होता है, ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम, और उससे अबनॉर्मैलिटी डेवलप होती है जिसे हम क्रोमोसोमल एबरेशंस बोलते हैं. एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस का एग्जांपल इज कैंसर सेल्स. फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन कॉज करते हैं, ऐसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स को हम म्यूटाजेंस बोलते हैं. एंड यूवी रेडिएशंस एक म्यूटाजेन है क्योंकि ये म्यूटेशन कॉज करता है इन ऑर्गेनिजम्स. नाउ जब म्यूटेशन आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड वन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. When mutation occurs due to change in single base pair of DNA, अगर DNA के सिंगल बेस पेयर में चेंज हुआ है उससे म्यूटेशन हो रही है तो दैट इज पॉइंट म्यूटेशन. एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, वेयर एज व्हेन द ऑल्टरेशन, व्हेन डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ DNA, जब DNA के बेस पेयर का डिलीशन होता है या इंसर्शन होता है नए बेस पेयर्स का, सो वी कॉल इट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. I am repeating, there are two types of mutation. जब single base pair of DNA में change होता है तो that is point mutation, and the best example is sickle cell anemia. But when there is deletion or insertion of base pairs of DNA, जब DNA के base pairs का deletion या insertion होता है, so that is known as frame shift mutation.
डिलीट कर दिया कोई बेस पेयर्स या इंसर्ट कर दिए एडिशनल बेस पेयर, सो दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. नाउ पेडिग्री एनालिसिस, सेवरल ट्रेट्स, कुछ कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का एनालिसिस इन द सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली, फैमिली के डिफरेंट जनरेशन्स में, अलग अलग जनरेशन्स में, कई जनरेशन्स में उस कैरेक्टर या ट्रेट की एनालिसिस करना इन अ फैमिली, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस. आई रिपीट, एनालिसिस ऑफ अ कैरेक्टर और अ ट्रेट, किसी भी कैरेक्टर किसी भी ट्रेट का फैमिली में, फैमिली की सेवरल जनरेशन्स में एनालिसिस करना, दैट इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस. एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करने में हेल्प करता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रेस एनी अबनॉर्मैलिटी और डिजीज, कोई भी. Now let's talk about disorders और abnormalities. Disorders को दो categories में divide किया गया है, Mendelian disorders और chromosomal disorders. जब single gene में change या alteration होने की वजह से कोई disorder होता है, then we call it Mendelian disorder. And when there is a disorder caused due to absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes, जब chromosomes के absence या एक्सेस या अबनॉर्मल अरेंजमेंट होने से कोई डिसऑर्डर होता है, देन वी कॉल इट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. और जब सिंगल जीन में चेंज होने से कोई डिसऑर्डर कॉज होता है, देन वी कॉल इट मेंडेलियन डिसऑर्डर. So disorders have been basically grouped into two categories, Mendelian disorder and chromosomal disorder. Mendelian disorder basically occurs due to change in single gene, or chromosomal disorder occurs due to absence or excess chromosome, absence of chromosome or excess of chromosome, और abnormal arrangement of chromosome. जब chromosome, कोई chromosome absent हो या कोई chromosome excess में present हो या किसी chromosome का abnormal arrangement हो रहा हो, that is known as chromosomal disorder. Now Mendelian disorders की कुछ examples हैं that we have to study: colourblindness, phenylketonuria, thalassemia, hemophilia, these all, sickle cell anemia, these all are examples of Mendelian disorders. Now let's proceed with color blindness, which is a Mendelian disorder. Now color blindness एक sex linked recessive disorder है. Now sex linked recessive disorder वो होता है जो अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में ट्रांसफर होता है. मींस जो अनइफेक्टेड कैरियर मदर होती है, फ्रॉम अ कैरियर मदर टू द सन. So color blindness is which type of disorder? Sex linked recessive disorder है, which shows transmission from unaffected carrier female to the male progeny, means from carrier mother to the son. Now why does it happen? What is the cause? It occurs due to defect in red or green cone of eye. Eye में red और rod और cone cells होते हैं, rod और cone cells. So these cone cells are responsible for color vision, और अलग अलग colors के cone present होते हैं. Now red और green cones में defect आ जाता है, and the person is not able to discriminate between red and green color. So it occurs due to the defect in red or green cone of the eye. आई की रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट हो जाता है, एंड द पर्सन इज अनेबल टू डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. दैट कंडीशन इज नोन एज कलर ब्लाइंडनेस. नाउ दिस कलर ब्लाइंडनेस occurs in 8% of males and 0.4% of females. Can you see the difference ki males mein the percentage is 8% and in females it is very less, that is 0.4%. So this is males are always in the risk of having this color blindness. Males ज़्यादा prone होते हैं color blindness में, females बहुत कम होती हैं. Now why? Son of a carrier female has 50% chances of being color blind. अगर कोई carrier female है, carrier mother से son में ये डिजीज जाने के 50% चांसेस होते हैं. सो देयर इज ऑलवेज अ 50% चांस ऑफ अ सन टू बी कलर ब्लाइंड. डॉटर नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए कंडीशन ये होती है दैट द मदर शुड बी कैरियर एंड द फादर शुड बी कलर ब्लाइंड. So this is very important. From a carrier female 50% chances होते हैं for the son to be colorblind, and daughter will normally not be colorblind unless mother is carrier and father is colorblind. So
for the son to be colorblind, carrier female होना चाहिए, and for the daughter to be colorblind, carrier female or carrier mother and colorblind father are required. So these were the few points about Mendelian disorder, that is color blindness. Now let's proceed about hemophilia. Hemophilia is also sex-linked recessive disorder. Now I've already told you that sex-linked recessive disorder अपना transmission show करते हैं from carrier female, that is carrier mother, to the male progeny, from a carrier mother to the son. Now यहाँ पे ये जो hemophilia disorder है ये क्यों हो रहा है? What are the causes? It occurs due to defect in a single protein. सिंगल प्रोटीन में डिफेक्ट हुआ, विच इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में के लिए एक कैस्केड ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस कैस्केड ऑफ प्रोटीन, उस ग्रुप की एक सिंगल प्रोटीन में डिफेक्ट हो जाता है. नाउ दिस डिफेक्ट, ड्यू टू दिस डिफेक्ट, अ सिंपल कट इन दैट पर्सन, अगर उस पर्सन की बॉडी पे कोई सिंपल कट होता है, दैट रिजल्ट्स इनटू नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, बिकॉज जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व प्रोटीन है उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है. सो ड्यू टू दैट अ सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. दिस इज हीमोफिलिया. नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल टू बी हीमोफिलिक बहुत रेयर होती है, क्योंकि अगेन फॉर दैट, फॉर द डॉटर टू बी हीमोफिलिक, फॉर द फीमेल टू बी हीमोफिलिक, द मदर शुड बी कैरियर एंड द फादर शुड बी फॉर द फादर शुड बी हीमोफिलिक. फादर हीमोफिलिक होना चाहिए and the mother should be the carrier. Now Queen Victoria's family pedigree, अगर हम Queen Victoria का family pedigree observe करते हैं, then it showed many, then she showed many hemophilic descendant because she was the carrier of the disease. So this hemophilia is very important, that Queen Victoria's का जो family tree है, जो pedigree है, that showed many hemophilic descendant because Queen Victoria was the carrier of this disease, hemophilia. Now let's talk about sickle cell anemia. Sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder. अभी तक we've studied about color blindness and hemophilia. They were sex-linked recessive disorder. And वो अपना transmission तब show कर रहे थे from carrier female to the male progeny, means from carrier mother to the son. Now this sickle cell anemia is autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder means it's showing its transmission from parent to offspring. ये अपना transmission parent to offspring तब तक show करता है when both the partners are carrier, जब दोनों the mother and the father are carrier or heterozygous for this the trait. So sickle cell anemia is autosomal recessive disorder, and this shows transmission when both the parents are carrier. जब दोनों parents carrier हो या heterozygous हो इस condition के लिए, तब ये अपना transmission show करता है. Now this disease is controlled by a pair of allele, HBA and HBS. ये pair of allele इस disease को control करते हैं. HBS and HBS डिजीज फिनोटाइप शो करता है. अगर ये जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है, HBS मीन्स हीमोग्लोबिन सिकल शेप्ड सिकल सेल है, सो दिस विल शो सिकल शेप RBC, सिकल डिजीज फिनोटाइप शो करेगा. HB and HBS में the person becomes carrier, the individual becomes carrier, means 50% probability है of transmission to the progeny में transmission की 50% probability हो जाती है. the individual जिसका ये genotype है वो तो unaffected है, लेकिन वो carrier की तरह काम करेगा. then it is caused, ये क्यों cause होता है sickle cell anemia, why is it caused? जो glutamic acid होता है उसका substitution हो जाता है by valine. the amino acid जो glutamic acid है that is substituted by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin. hemoglobin की chains होती हैं alpha chain, beta globin chain. तो बीटा ग्लोबिन चेन पे 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट कर देती है वैलिन. सो दिस इज द रीजन फॉर सिकल सेल एनीमिया, दैट सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन के बीटा ग्लोबिन चेन में 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन. एंड ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है अमीनो एसिड का, ये क्यों होता है? द रीजन इज सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. नाउ दिस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड अकर्स ड्यू टू सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन. जो कोडॉन है GAG,
that is substituted by GUG. सो GAG कोड कर रहा था ग्लूटामिक एसिड के लिए और उसका सब्सटीट्यूशन हो गया GUG में, वो कन्वर्ट हो गया, दैट इज वाई, तो GUG की वजह से वो वैलिन के लिए कोड करने लगा. सो सब्सटीट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड अकर्स ड्यू टू सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन फ्रॉम GAG टू GUG. सब्सटीट्यूशन हुआ GAG का बाय GUG एंड इसी वजह से ग्लूटामिक एसिड को किसने सब्सटीट्यूट कर दिया, वैलिन में. नाउ जब म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बन रहा है तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होके लो ऑक्सीजन टेंशन पे इट कॉजेस चेंज इन RBC शेप. नाउ दिस हीमोग्लोबिन जो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो लो ऑक्सीजन टेंशन पे RBC की शेप में चेंज कॉज करने लगता है एंड इट इज चेंज फ्रॉम बाइकॉन्केव डिस्क शेप टू सिकल शेप. वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप की जो RBC नॉर्मल RBC होते हैं दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सिकल शेप RBC. एंड इन सिकल शेप RBCs में जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है इट कैन नॉट रिसाइड, तो सिकल सेल एनीमिया से एक प्रोटेक्शन, एक इम्यूनिटी मिल जाती है टू मलेरिया. Now let's talk about phenylketonuria. Phenylketonuria is an inborn error. A person is born with this error. Inborn error of metabolism है, which is inherited as autosomal recessive trait. So like sickle cell anemia, autosomal recessive trait था. Phenylketonuria is also autosomal recessive trait. ये भी अपना transmission तभी show करता है when both the parents are heterozygous or carrier. Now the affected person फिनाइलकीटोन्यूरिया में बेसिकली जो अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी बॉडी में वो एंजाइम लैक करती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग फिनाइल एनिलीन टू टायरोसिन. फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाली एंजाइम जो है वो एब्सेंट होती है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है दैट फिनाइल एनिलीन गेट्स अक्यूमुलेटेड और वो कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में. नाउ ये फिनाइल पायरुविक एसिड का अक्यूमुलेशन इन द ब्रेन इट रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन. ये पर्सन को मेंटली रिटार्डेड बना देता है एंड अपार्ट फ्रॉम दिस this compound is also excreted through urine because of poor reabsorption by kidney. ये फिनाइल पायरुविक एसिड ब्रेन में accumulate होने के साथ साथ excrete भी होता है through urine क्योंकि किडनीज इसको बहुत poorly absorb कर पाती है, they are hardly able to absorb them. So that was all about phenylketonuria, sickle cell anemia. Now let's move towards thalassemia. Thalassemia is also autosomal recessive. ये भी blood disease है and it shows transmission from carrier or heterozygous parents to the offsprings. Now basically thalassemia क्या है? Thalassemia is caused due to reduced synthesis of one of the globin chain that makes up hemoglobin. Hemoglobin की दो chains होती हैं, alpha chain and beta chain. There are basically two alpha and two beta. So alpha और beta chain में से कोई एक chain की poor या reduced synthesis होने लगती है, उसी condition को thalassemia बोलते हैं. So I hope you can correlate with sickle cell anemia. Sickle cell anemia में case different है and here thalassemia the case is different. So thalassemia is caused due to reduced synthesis of one of the globin chain of hemoglobin. Hemoglobin को बनाने के लिए दो टाइप की चेन होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. सो इन दोनों में से किसी एक ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस बहुत कम हो जाती है जिसकी वजह से थैलेसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है. अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से एनीमिक हो जाता है, द पर्सन हैज एनीमिया. नाउ थैलेसीमिया आर ऑफ टू टाइप्स. अल्फा थैलेसीमिया, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन इफेक्टेड हो रहा है तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं एंड अगर बीटा ग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन इफेक्ट हो रही है देन वी कॉल इट बीटा थैलेसीमिया. Now thalassemia differs from sickle cell anemia in that कि thalassemia एक quantitative problem है जहाँ पे less synthesis हो रही है of globin chain of hemoglobin. Quantity कम क्वांटिटी में बन रहा है, कम क्वांटिटी में सिंथेसिस हो रहा है. Whereas sickle cell anemia is a qualitative problem where the synthesis is where there is a problem in synthesizing incorrectly functioning globin. वहाँ पे hemoglobin जो है वो abnormally working है. So that is a qualitative problem, sickle cell anemia, and thalassemia is a quantitative problem. This is a very important point that should be learned by you.
Now let's move ahead and talk about chromosomal disorders in detail. Chromosomal disorders are of two types, that is aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy में basically क्या होता है, जब chromatids जो chromosome के arms होते हैं उन्हें हम chromatids बोलते हैं. सो जो क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है वो नहीं हो पाता है ठीक से, तो या तो ये क्रोमोसोम का गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है. सो दैट कंडीशन इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिविजन. सेल डिविजन के टाइम पे क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, so that results in gain or loss of chromosomes. That is the condition aneuploidy. And aneuploidy के बहुत सारे examples हैं, Turner syndrome, Down syndrome, Klinefelter syndrome. Now polyploidy में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, मीन्स कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता है आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के टीलोफेज स्टेज के बाद देयर इज फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस एंड इसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम. पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स. सो polyploidy is basically observed in plants and aneuploidy is observed in humans. So I hope the reason is clear that aneuploidy occurs due to failure of segregation of chromatids during cell division. Cell division के time पे chromatids का segregation नहीं हो पाता है, and polyploidy occurs when telophase stage के time पे after telophase stage cytokinesis नहीं हो पाता है. Now Down syndrome. This is a genetic disease and it is caused due to presence of additional copy of chromosome number 21. जब chromosome number 21 की additional copy present होती है, that condition में the person is suffering from Down syndrome. And Down syndrome को हम trisomy of 21 भी बोलते हैं because all the chromosomes are present in pairs. तो जब दूसरा copy present है, so that is a pair, but जब एक तीसरी copy आ जाती है, additional copy, so we call it trisomy of 21. The genetic disease caused due to presence of additional copy of chromosome number 21, trisomy of 21, उसे हम Down syndrome बोलते हैं. And this disorder was first described by Langdon Down. Langdon Down was a person जिन्होंने पहली बार इस disorder को describe किया था. And there are certain things जिससे आप affected individual में symptoms observe कर सकते हैं. These symptoms are that the affected individual will be short statured with small round head. Short body means the person will be short heighted with small round head, furrowed tongue, there will be a furrow in the tongue, and partially open mouth. Mouth will not be closed, that will be partially open, and palm is broad with characteristic palm crease. So the palm will be broad and there will be characteristic palm crease, and physical, psychomotor and mental development will be retarded. Every type of development, physical, physiological, mental, every type of development in that individual will be retarded. So in total, Down syndrome is what? The genetic disease caused due to the presence of additional copy. वो genetic disease जो क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी होने की वजह से होता है, दैट इज डाउन सिंड्रोम. एंड हम इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक हर क्रोमोसोम पेयर्स में प्रेजेंट होता है, तो दो एक पेयर एक होता है दूसरा होता है, बट ये तीसरा कॉपी आ जाती है, सो दैट इज ट्राइसोमी. Now this disorder was first described by Langdon Down, and affected individual की short statured body होती है, small round head होता है, furrowed tongue is there, partially open mouth. The palm is broad with characteristic palm crease, and all type of development in the body is retarded. Physical, psychomotor, mental development is retarded. Now let's move ahead and talk about Klinefelter syndrome. Now this genetic disease is caused due to presence of additional copy of X chromosome. Down syndrome was due to additional copy of 21 chromosome. Klinefelter syndrome is due to additional copy of X chromosome. जो sex chromosome है, that is X chromosome, उसकी additional copy की वजह से Klinefelter syndrome होता है. So now like 22 autosomes are there, so 22 pair of autosomes are there, तो 44 हो गया. And जो 23rd pair था, that is sex chromosome, तो उसकी जगह एक
एक और X क्रोमोसोम आ गया, तो 44 प्लस डबल XY 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन में. So this genetic disease is due to the presence of additional copy of X chromosome and it results in the genotype और karyotype of 47 chromosomes हो जाते हैं. 22 पेयर ऑटोसोम्स यानी कि 44 एंड यहाँ पे X और Y होना चाहिए, तो एक एडिशनल X आ गया, तो 44 प्लस 3 दैट इज 47. तो 47 का कैरियोटाइप हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में. नाउ सच एन इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल की बॉडी में ओवरऑल तो मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, बट फेमिनिन डेवलपमेंट गायनेकोमास्टिया भी हो जाता है. गायनेकोमास्टिया इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ऑल्सो अकर्स एंड सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं, दे आर नॉट फर्टाइल, दे नॉट बी एबल टू reproduce. Now let's talk about Turner syndrome. Turner syndrome is caused due to absence of one X chromosome. So now can you correlate between Klinefelter and Turner syndrome? Klinefelter में there is additional copy of X chromosome and Turner syndrome में there is absence of one X chromosome. There the karyotype was 47. Here the karyotype is 45. Normally कितना होना चाहिए? 46 chromosomes should be there. That is 22 pair of autosome. So 44. But यहाँ पे double X की XY की जगह there is absence of XX की जगह यहाँ पे there is absence of one X chromosome, so X0, so that is यहाँ पे 44 प्लस X 0 हो गया, so 45 हो गया. 44 प्लस 1X that is 45. तो karyotype here is 45, there in Klinefelter was 47. वहाँ पे additional copy of X chromosome था and यहाँ पे absence of one X chromosome है. Klinefelter basically males में होता है, Turner is observed in female. Now in Klinefelter, the overall masculine development was there and the feminine development could be seen. Development of breast could be seen in males. And here what happens, these females are steriles and they have rudimentary ovaries. Rudimentary ovaries means they will not function properly. They also lack secondary sexual characters and they are sterile, they will not be able to reproduce further. Now there is one question which I wanted to discuss. A diploid organism is heterozygous for 4 loci. 4 लोकेशंस के लिए, 4 कैरेक्टर्स के लिए एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस, कितने तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. An organism is heterozygous for 4 loci means 4 characters के लिए the organism is heterozygous. So how many types of gametes can be produced? For this there is a formula. To calculate the type of gamete there is a formula, that is 2 to the power n. 2 to the power n, where n stands for number of characters for which organism is heterozygous. So here we have already been told that heterozygous, the organism is heterozygous for 4 characters of 4 loci. So 2 to the power n, 2 to the power 4, that is 16. So diploid organism heterozygous for 4 loci or 4 character will produce 16 type of gamete. That was all for today. Thank you.